आज हम बात करेंगे ब्रो व्हाई गर्ल्स इग्नोर इंडियन मैन द ब्रूटल ट्रुथ। ऐसा क्यों है कि मेरे भाई की बहुत सी लड़कियां जो है ना वो इंडियन मैन को इग्नोर कर रही हैं। व्हाट इज द वन फकिंग रीजन? द वन फकिंग रीजन इज दैट 100% all the women they're gonna ignore anyone, any man, any man on this planet Earth जो average है somewhere that's it. So I'm only including all the Indian men, those who are fucking average, and I would tell how they are average. Even there is a guy who makes fucking, like 100 million. I would still call him average. If you're invisible to her biology, you do not exist. The first thing you need to understand, bro, उसकी biology के लिए अगर तू invisible है ना, इसका मतलब मेरे भाई तू exist नहीं करता. Do you understand it? अगर तू एक Lamborghini चला रहा है या Ferrari चला रहा है, doesn't matter. अगर उसकी biology react नहीं कर रही ना मेरे भाई, वो तेरे साथ sex नहीं करना चाहती. Do you fucking understand? She would only fuck you if she's getting old and no other guys, fucking marrying her. So she see you as a man who got resources, so she gonna settle with you. But in the later time, in future, she gonna cheat with you. That's the whole point. अगर तुझे लगता है कि भाई 30 की उम्र में है, जब तू एक अच्छी जॉब करता है तो तेरे बैंक में कुछ अच्छे पैसे आते हैं, you get a government job, and now you see a lot of ladies would want you, even though कि तू उनकी जिंदगी में जब 22 का था तो तू एग्जिस्ट भी नहीं करता था, 25 का तब भी एग्जिस्ट नहीं करता था, 28 का था तब भी एग्जिस्ट नहीं करता था, because you were fucking working on your shit. And now all of a sudden you got the job, a good government job, just make decent money, and she's 28 years old. I'm not talking about any lady who's in her prime, like any any good lady. She would be in her prime, like from 20 to 23. तो मुझे नहीं लगता कि भाई 20 से 23 की उम्र तेरे वाली तेरे ऊपर हिट करेगी. But if there is a woman in your league, she sits with you and she's getting old, she knows you a little bit, she would be interested in you. Her parents would be interested in you. If we just go and power, I like your girl, I want to marry her. They would be happy. She would be happy because she would see that कि उसके ऑप्शन जो है ना वो चार है. कि अब अगर एक साल और आगे बढ़ गई वो, तो जो ऑप्शन अभी हैं वो और कम हो जाएंगे. So her sexual market value will literally decrease. So she see you as a man who is fucking and again got money, stable job, that's it. So it is not कि उसकी biology react कर रही है. No, it's just like कि उसका mind सोच रहा है कि यार इस बंदे के पास resource है, so I would survive with this guy. I would be with this man. So that's the only fucking reason. That's the only reason. I So it's not the biology yet. You can be still invisible. Maybe she had an ex. उसकी लाइफ में एक एक्स रहा होगा जब वो 22 या 23 या 24 या 25 की उम्र में थी. बट वो एक्स बहुत ज्यादा उसकी like उसकी बॉडी को रिएक्ट कराता था. Her body was like, if you're gonna say this guy name, उसकी बायोलॉजी जो है ना वो हिलने लग जाएगी. Like her hairs would be boom. उसके उस बंदी का pupil dilate हो जाएगा. So she would think everything about that man, right? That ex. So you probably gonna fuck her, but she's gonna fantasize about her ex. Well, yeah, that was a deep shit. So women don't ignore you because they're modern or because the Indian society is broken. They ignore you because our biology sharpened over 200,000 years of evolution, scans you in 3 seconds and find nothing arousing, nothing strong, and nothing rare. That's the whole point, मेरा भाई. वो तेरे को ignore इसलिए नहीं कर रही because the time is modern. Fuck nah. Our Indian society is broken. No. शी इज ओनली इग्नोरिंग यू अगर उसको लगेगा कि यार उसकी बॉडी अराउज नहीं हो रही. डू यू अंडरस्टैंड इट? उसकी बॉडी अगर अराउज नहीं हो रही, तू स्ट्रांग नहीं है, तू रेयर नहीं है, तो भाई वो तेरे साथ कभी उस हिसाब से जुड़ नहीं पाएगी जिस हिसाब से तू चाहता है. Your posture, tone, eye contact, micro movements, every subtle thing is screaming mediocrity. अगर तेरा posture जो है वो
ढीला रहा, तेरे जो तेरा टोन है वो भी कंट्रोल्ड नहीं रहा, तेरा आई कांटेक्ट है वो भी डॉट कर रहा है, माइक्रो मोमेंट्स अगर तेरी इस हिसाब से रही तो भाई ये सब्टल थिंग्स जो है ना, ये मीडियोक्रिटी जो है ना ब्रॉडकास्ट करेंगे उसके माइंड में, so she would find you fucking very repulsive and an average guy until you fix this and you just a noise in the crowd of 1.4 billion people. Our view here कि bro, your energy is your first impression, your lack of social calibration, your absence of self-defined value, review, and micro action plan. So your energy is your first impression. Reality, energy is primal. The first thing you got to understand, my brother, is energy. You know, this, अगर तेरी एनर्जी वीक है ना मेरे भाई, इस दुनिया में तेरे को कोई सीरियस लेगा ही नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. I want to give you one good example. You know, if you see the speech between Narendra Modi and Manmohan Singh, what is the difference here? What is the difference here? It's the only difference is energy and conviction. जब मनमोहन सिंह बोलता था, he was like very articulated, polished, हर चीज जो थी structured और refined way में जा रही थी, which is great, which is fucking good. That's what makes you a great orator. But orator जो है ना वो fail हो जाता है अगर वो conviction add ना कर पाए. So why Narendra Modi always win in order to create, you know, bigger emotions among Indian people? Why is that? Because he speaks with conviction. That's the only fucking reason. जो चीज वो बोलता है वो उस चीज मैं ना, like everybody, those who are fucking listening him, they all feel him, they all see what he sees. So that's the whole fucking point here. It's about energy, it's about conviction. Manmohan Singh was saying the same thing. For example, yeah, like yeah, you all going to be rich, and now Modi gonna say it, you all going to be rich. Look at the difference here. Look at the difference. So it's all about energy and conviction. A woman's brain processes your presence faster than your words. Her amygdala, the fear and safety center, decide within 0.7 seconds this man is in control of himself or this man is just noise. So you got to understand here. 0.7 seconds. That's it. 0.7 seconds. उस बंदी को पता चलता है कि भाई ये बंदा बंदा है, ये बंदा कंट्रोल में है, या ये बंदा सिर्फ एक नॉइस है. दैट्स इट. सिर्फ 0.7 seconds में. सो इवन दो शी इज नॉट सीइंग यू, वो आंखें खोल के तुमको देख नहीं रही है, बट अगर वो तेरी तेरे सामने से गई ना मेरे भाई, उसकी बायोलॉजी ऑलरेडी डिसाइड कर ले कि यार ये बंदा है. इफ ही हिट ऑन मी और इफ ही ट्राई टू, यू नो, लाइक pursue me or try to hit me up, like, fuck, I would give him a chance. I won't give him a chance. I would definitely want him to fuck me. That's the point you got to understand. It's the energy, man. Look, man, most Indian man, जब भी तू देखेगा मेरे भाई आस पास बहुत से लोगों के ना शोल्डर झुके होते हैं यार. या तो वो बातें बहुत तेज करते हैं, या तो वो कदमों की रफ्तार जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा तेज होती है जब वो एक सोशल गैदरिंग में हो या तेरी क्लास में हो गए. तो जब तेरे को बाहर जाना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो outside, you would see a lot of people going to see you. आप बहुत से लोग तेरे को देखेंगे तो तू बहुत ज़्यादा तेज भागेगा. या तो तेरे को कुछ बोलना है, या तो कुछ लोग उनको बोलना होता है तो they just, you know, speed it up like fuck fast, so they have no control. Or there are certain people who are like, you know, addicted to screen. अगर uh, again I don't I there's, you know, there are people what they do is that there are certain people what they do is fucking they use phone. मेरे भाई अगर तू आईफोन चला रहा है ना तो इसका मतलब तू इतना, like, you're not fucking rich guy, man. It's just a fucking phone. It's a human created shit.
So don't flex your phone. Don't pretend that you're busy. उस बंदी को ना तेरी आंखें देखनी है मेरे भाई, उस बंदी को तेरा पोस्चर देखना है, तू झुका हुआ होगा, तू ऐसे फोन चलाएगा और तू बोलेगा भाई यार I'm fucking busy. No, she doesn't want that. It's not the it's not about women. It's about every other guy, every other man who is fucking scanning you that if this man is a fucking threat to me. Because every other man is your enemy, right? तू इस एनिमी की दुनिया में चल रहा है भाई, हर एक लोड़ा तेरा एनिमी ही है। और अगर तू फोन झुका के ऐसे ही चलता रहेगा और शोल्डर झुके होंगे तो भाई वो बोलेंगे ये तो बंदा कुछ है ही नहीं, fuck off. What I'm saying is that whenever you fucking walk, you gotta exhibit dominance. Stop fucking using phone. Because that signals you got no strength. मतलब उससे signal जाता है कि भाई इस बंदे के पास कोई strength ही नहीं है. You walk into a cafe, your shoulders are slouched, eyes dotting. She notices before you even get to the counter. You open your phone, scroll, fidget at that moment. You have already lost her attention. She's talking to her friend, but her biology has decided not a threat, not an option. For example, तू कैफे पे जाता है, तेरे शोल्डर झुके होते हैं, तेरी आंखें इधर उधर देख रही होती है, and she noticed before you even get to the counter. It's not she only. It's like there are so many she's. They're gonna be on the fucking table, and they're all gonna notice you that there's some guy who came, but I don't know if there was somebody. Like you are not gonna be existed in their fucking eyes. फोन मत चला, कहीं भी जा रहा है फोन को जेब में रख, तेरा हाथ जाएगा जाएगा, उस हाथ को पकड़ के रख भाई, फोन मत चला. You go out there in the world, you don't use your phone. Make it a fucking rule. Shoulder straight. बोल कि भाई किसी ने ना गन रखी हुई है पीठ के ऊपर. Straight. क्योंकि बोलने से पहले काउंटर पहुंचने से पहले वो तेरे को ना स्कैन कर ले कि यार ये बंदा है वो जिससे मेरी बायोलॉजी बताएगी कि यार इज दिस सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट और जस्ट सम फकिंग रैंडम गाय. Micro demo is enter a room at 80% pace, slow, deliberate, calm, shoulder back and neutral, not stiff. जब भी किसी रूम में जाता है, जो तेरी स्पीड है भाई वो 80% होनी चाहिए. अगर तू 100 की स्पीड से जाता है तो 80% ला उसको. और वो स्लो होना चाहिए, डेलिबरेट होना चाहिए, मतलब उसके पीछे ना इंटेंशन जुड़ी हुई है. मतलब तेरा कदम है तो अगर तो कोई इसी डायरेक्शन में जाना तो चेंज नहीं करेगा गुरु. लाइक यू नो दैट यू गोटा वॉक here. So like there are certain moments when you get too nervous, like you get too nervous and you just fucking go here and there. तेरे कदमों में भी ना डिसीजन जो है वो डेलिबरेट नहीं रहता है, जस्ट लाइक मूव हियर एंड देयर. यू तू काम भी नहीं रह पाता. शोल्डर बैक न्यूट्रल नॉट स्टिफ. बैक होने चाहिए उतने ज्यादा ना स्टिफ नहीं होने चाहिए, लाइक कि भाई वो हो गया तेरे को numb हो गया. तो होल्ड 1.5 seconds of steady eye contact when you meet someone. मेक श्योर कि जब भी जिस बंदे से मिले 1.5 seconds का आई कांटेक्ट रख उस बंदे के साथ. सो इफ यू गोना do this thing, eventually your brain gonna be more, what do you call, habitual, with this pattern. Or your pattern जब repeat करता रहेगा, eventually you would be able to see her and you're gonna fuck her for more than an hour. If you can only fuck her for an hour. If you fuck her for 2 seconds, then whatever I told you, my brother, it all gonna fail. Because they say, bro, the longer your pipe stays in, the better the digging is. So, yeah, I mean, they don't say. Maybe they say just before speaking, pause half a second. Let silence work for you. जब देख रहा है उस बंदी को तो या किसी इंसान को भी, तो मेक श्योर नहीं थोड़ा सा साइलेंस ले ले, मतलब लफ्जों से बोलने से पहले. Second is, my brother, your lack of social calibration. Social calibration is reading the room. तेरे को रूम को ना पढ़ना पड़ेगा. It is why the same joke can make one group laugh and another go silent. Most Indian men too loud, too fast, too fake. Why? Years of low real world interaction, overconsumption of fake exaggerated personalities online. You got to understand भाई, तेरे को ना रूम की वाइब को पढ़ना पड़ता है कि मतलब
एक जोक मारा तूने, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट मेड अ जोक, यू आर इनटू अ कैफे, और यहाँ दो तीन बंदियां बैठी हुई हैं, तो उसमें से तू एक जोक मार रहा है, नॉर्मल वो हंसे थोड़े, फनी, देख हंसी क्या थी, नॉर्मल फनी, नॉर्मल थी, मतलब वो टूटे नहीं, एवरीबडी इज लाइक यू गॉट टू सी द सिचुएशन ऑफ द ग्रुप, यू gotta रीड द वाइब, मतलब मेरे को कैलिब्रेट कितना करना है, दैट्स व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, लाइक यू कैन जस्ट fucking, yeah. You don't have to laugh too much, so you just don't have, it's, what it means is that you, it's not about joke only, it's just you got to fucking match the vibe. Some people, what they do is, for example, you go to a certain gym, like there are a lot of people, they shout so well, like so loud, mostly, I believe कि यार, मतलब चल ठीक है यार, तेरा shout ठीक था यार, like it's good, but mostly they do it to get their attention. So what it means that fucking guy is hollow, is fucking, is looking for attention, is fucking pussy, everybody around him, like, come on, and you're gonna shout more, fuck, nobody cares, bro, put your pants back. So you're with a girl and a group of her friends, she comes speaking slow, you try to be funny guy, loud voice, fast joke, fake laughter, her biology senses desperation instead of attraction. So that's the same shit. Like अगर तू, you know, gym में भी loudly शोर करेगा, so it would speak as if this guy is desperate for the attention. So a guy with a high fucking aura, high energy, high charm, वो कभी shout नहीं करता. He stay preserved, he stay calm, and उसको पता है कि भाई कौन से situation में मेरे को किस हिसाब से calibrate करना है. जैसे कि यहाँ देखेगा तू कि यू आर विद अ गर्ल इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, शी इज काम स्पीकिंग स्लो, ग्रुप ऑफ उसके दोस्त भी हैं, तो हर एक माहौल जो है ना एकदम प्यारा सा माहौल है, इट्स लाइक क्वाइट वाइब, इट्स लाइक देयर इज अ रेनिंग आउटसाइड, and you just done, like you did your sex, and now your mind is so free, like it's wide open and you don't want to shout, this is kind of moment you are in. So I hope you can imagine what I'm trying to say. So मतलब ऐसा कुछ तेरा mind feel कर रहा है. it's I'm just giving you a clear picture so you can think, man. So yeah, you're with a girl. So yeah, you're with a girl and a group of her friends. She's calm, speaking slow, and you try to be funny guy. तो उसके दोस्तों के बीच में माहौल काफी काम है, काफी पीस पीस के साथ है, like it's kind of moment like मतलब बाहर बारिश है और तूने अभी सेक्स किया और उसके बाद तू रिलैक्स कर रहा है now, so this is a kind moment here. So उस टाइम पे अगर तू भाई एक फनी गाय बनने लग जाए, यू काइंड ऑफ लाउड वॉइसेस, फास्ट जोक्स, फेक लाफ्टर, हर बायोलॉजी जो है ना वो सेंस करेगी यार, ये क्या बंदा है यार, who the fuck is this guy, who the fuck is this guy, what the fuck he's saying. Instead of attraction, you have triggered discomfort and you are now the clown, not the man. That's the whole point, right? That's what a lot of young fucking guys are doing. They try, वो attention के लिए desperate हो रहे हैं, वो room को ना समझ नहीं पा रहे कि भाई मेरे को कितना calibrate करना पड़ेगा. They have to scan the room. अगर तू room को scan नहीं कर पा रहा, तू समझ नहीं पा रहा, लोगों को समझ नहीं पा रहा कि जिस टेबल पे अभी तू बैठा है, वो कौन सी वाइब के साथ ना, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, वो कितना ज़्यादा पिच अपने ऊपर करना चाहते हैं और कितना ज़्यादा वो अभी लाउड, मतलब इन्वॉल्व है, और कितना ज़्यादा वो, अगर तू कुछ बोलेगा तो वो उतना ही ज़्यादा जाएंगे ऊपर या नहीं, नहीं ना. सो हाउ शुड यू बिहेव, तेरे को उस क्लाउन बंदे की तरह नहीं बिहेव करना, देन हाउ यू शुड बिहेव, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पिंग पोंग रूल. Rather than making a joke, fuck it. You don't need attention. Try to listen her. Try to ask question. After two sentences, ask a question. Fuck. Example, yeah, I have been training lately. What about you? What do you train for? Calm, grounded tone. That's it. For example, when you ask a question, what does it do? The thing is,
you lead the conversation, and also the other person think कि यार ये बंदा मेरे को सुन रहा है. So you don't just like, you respond. You don't just respond. You come with a question. Do you understand it? So she probably have asked him कि आप train कर रहे हो? Like you go to the workout lately? And he says, yeah, I've been working out lately. I've been training lately. What about you? What do you train for? He just responded, and then he added the extra shit. What do you train for? So that is calm and grounded tone. So it's just controlled, and that, whatever he said, it was, behind a pure thinking. So it was, that's it. Weaponized pause, say something, then let 2 seconds silence hit before speaking again. So जब भी तू कुछ बोलता है 2 सेकंड का silence ले, फिर बोलना चालू कर. Tone variation, slightly lower your voice when you say words like focus, discipline, or growth. It signals authority without aggression. जब भी कोई पावरफुल अथॉरिटी वाले लफ्ज बोलेगा तो उस टाइम ना भाई तेरे को अपनी जो वॉइस है ना वो धीमे कर लेनी है ताकि उसमें वेट आए. फॉर एग्जाम्पल, look, you need to focus on your life. This is very normal. You need to focus on your life. Fuck. You need. Wait, again. You need to focus on your life. Normal. You need to focus on your life. अब मैंने ना focus पे क्या किया, emphasize किया. I put more fucking weight here. So that's the whole point. जब तू powerful लफ्ज के ऊपर अपने लफ्जों को like what do you call voice जो है ना धीमी कर लेगा, it means उस लफ्ज से क्या होगा कि उस बंदे की ना memory में shock जाएगा. So memory में shock जाएगा, they're gonna remember what you just said. So if you're gonna speak everything fast, वो तुझे भूल जाएंगे bro. They're going to forget you. Third is your absence of self defined value. Reality. Value is not your salary, it is your trajectory. Women are drawn to a man in emotion, building something, owning their lane. The average Indian man has no mission, no skills, no body, nothing unique to offer, and deep down he knows it. You need to understand, brother. जिस बंदे के पास ट्रेजेक्ट्री नहीं है, जिस बंदे के पास हाई मोशन नहीं है अपनी लाइफ के द्वारा, वो बंदा कभी बंदी को ना अराउज्ड नहीं करा सकता. लाइक उसके दिमाग को अराउज नहीं करा सकता. उसका दिमाग भी अराउज तभी होता है जब वो क्यूरियस होती है, जब उसका बंदा मिस्ट्री में होता है, जब उसका बंदा अनप्रिडिक्टेबल रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन देर इज अ गाय हु मेक्स फकिंग 1 लाख. समझ रहा है? अगर एक बंदा जो है वो 1 लाख कमा रहा है, बट उसकी लाइफ जो है ना ट्रिजेक्ट्री में नहीं चलेगी, वो प्रिडिक्टेबल मोशन में चलेगी. 1 लाख कमा रहा है, फिर कुछ 10 साल बाद डेड हो जाएगा. नॉर्मल है, प्रिडिक्टेबल मैनर में है, वो बंदा कुछ अनलिमिटेड नहीं करेगा. बट एक बंदा जो 30 या 40 हज़ार कमाता है, बट उसके पास बड़े बड़े प्लान्स है, ही गॉट फकिंग बिग मिशंस, ही गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, तो वो उनके पीछे भी वर्क कर रहा है. तो वो बंदी किससे इंस्पायर्ड होगी? उसका माइंड जो है ना सेक्स किस बंदे के साथ करना चाहेगा? द मैन हु फकिंग मेक्स 40K or the man who just like who made 1.5 lakh or who made 1 lakh? With who? The guy who makes fucking 40K. That's it. Because ये बंदा जो है ना trajectory में, he's in the motion, he's trying to he's doing something that is it, that gonna give the bigger fucking reward in a future. That's the whole point. जो बंदा 1 लाख कमा रहा है ना, बट उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल है, प्रिडिक्टेबल है, वो बंदा अराउज नहीं कर पाएगी. वो बंदा अराउज नहीं कर पाएगा उस बंदी को. वो बंदा अराउज नहीं कर पाएगा. So he cannot, he won't be able to make her fucking aroused. So he has no mission, no skills, no body, nothing unique. तो वो बंदा अगर उसके पास कोई मिशन नहीं है, नो स्किल नहीं है, बोलता है भाई 1 ही लाख आएगा, मेरे को कोई स्किल्स ऐड नहीं करनी है, उसकी बॉडी भी नॉर्मल है, बोलता है घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे पिज्जा खाता हूँ, all that shit. Fuck, and he's fucking normal guy, and deep down he knows it, he has nothing else to offer, and her biology knows it too. So she will settle for you later. Her option shrinks, but she won't desire you. She will never fantasize about you when you're sleeping next to her. She will never brag about you to her friends. So agar dekh mere bola mere bhai, value is not your salary, it is your trajectory. So women are drawn to a man in emotion, building something, owning their lane. The average Indian man, he has no mission. तो अगर एक बंदे के पास अभी अच्छी एक सैलरी है, तो वो बंदी तेरी जिंदगी में इसीलिए तभी आएगी जब like when her option shrinks. So she wants to settle down now. That's the only reason she comes. So इसका मतलब ये नहीं कि bro
वो तेरे को डिजायर कर रही है. She's not desiring you, she's desiring your fucking money, that's all. So she will never fantasize about you when you're gonna fuck her. She will fantasize about somebody else. ये लिखा गया है, दिख नहीं रहा. But oh, sorry, it's in her fucking mind. So when you are sleeping next to her, she will never brag about you to her friends. वो अपने दोस्तों में भी कभी बात नहीं करेगी मेरे भाई तेरे पास तेरे लिए. You meet a girl, she asks, so what do you do? You mumble, walking in it. Her interest drops by half. Now compares to the man who says this. अगर तू एक बंदी से मिलता हो तो वो बोलती है कि यार तुम क्या करते हो, लाइक व्हाट डू यू डू, और तू मम्बल करता आई एम वर्किंग इन दिस शिट, आई एम वर्किंग इन दिस, आई एम वर्किंग इन आईआईटी, आई एम दिस. सो हम काफ़ी प्रिडिक्टेबल मैनर पर तेरी लाइफ है भाई, तू कुछ यूनिक नहीं कर रहा है. अब ये देख भाई, एक बंदा एक और सवाल आता है. सो हर इंटरेस्ट ड्रॉप्स बाय हाफ नाउ कंपेयर दैट टू द मैन हु सेज दिस. अब किसी और बंदे से पूछा, वो बोलता है कि आई एम बिल्डिंग समथिंग, आई एम स्केलिंग इट अप दिस ईयर. It is, it's intense, but I like the pressure. So that's the whole point. मतलब बोल रहा है कि मैं build कर रहा हूँ कुछ, मैं इसको scale करूँगा. इसका मतलब I'm gonna make it fucking bigger. What I'm fucking doing, I'm gonna scale it in that way where I'm gonna be a billionaire. So that's the way. Like, you scaling is something that is uncalculated, right? Like, you cannot calculate how much you're gonna make, because that's the whole point. Because the reward is humongous. अब जो बंदा normal walk, I'm walking in it, or I'm walking for, he cannot scale his shit, right? वो जिसके लिए walk कर रहा है वही scale करेगा ना bro. So different biology response, instant respect, subconscious attraction. सब अब जब ये बंदे इस बंदे से बात होगी तो वो बोलेगा I'm working on this shit, I'm building, I'm gonna scale it, it's intense, but I like the pressure. अब यहाँ उसका subconsciously वो बंदी जो है ना उस बंदे से attract होगी, because she sees a man who fucking conquers shit. She sees a man who likes pressure. She sees a man who fucking resilient. Micro demo. Spend 60-minute daily building one skill or training your body. 60 मिनट अपने दिन के किसी चीज के ऊपर वर्क कर ब्रो. Just build something. Maybe train your body. Yeah, I hope कि तू train तो body करता ही होगा. What do you mean कि तू body training करता है? Fuck man, what do you mean? Or and also I would say bro, 2 hours. Yeah, like spend 2 hours every day, like 60 minutes to what you want to do, what else you wanted to do when you were a kid, and make sure you put that fucking time into that. Or you can scale it to 2 hours, 3 hours, as much time you have. If you work for somebody, but अगर तू रात को थोड़ा लेट सोए तो भाई इस चीज़ के लिए वर्क करे तो eventually you can scale what you wanted to do. जो तू पहले करना चाहता तो तू वो स्केल कर पाए. सो तू एक जगह में ना, मतलब वो क्या बोलते भाई उसको, मतलब एवरेज लाइफ में बंधा ना रहे. So create a weekly proof of progress, a video design, a project update, everything. Write a mission sentence daily. For next 6 months, I'm becoming the man. Specific goal जो भी तेरा है. Review micro action plans, slower walk, grounded eyes, no phone in hands, calibration, 2 sentences, then ask question, control your pace, pauses, lower your tone on keywords. Value you मेरे भाई, 1 hour building daily, whatever I fucking said it, this is the whole action plan. Me to read this. 21-day execution plan. Daily 5 micro interaction, 1 hour of building, 10 minutes of voice practice. Weekly upload or share your progress. Make sure कि जो तूने वो किया वो अपने अपने आप ही से शेयर कर, like you just fucking look at it. So जब जब तू खुद देखेगा तो तेरे को पता चलेगा कि भाई मैं कितना कर रहा हूँ. Then compare it to the other weeks, so you would see how better you're doing it. By day 21, people will start initiating conversation. Women will start noticing you without you saying a word. So when you're gonna operate your life, when you're gonna exercise these things, eventually, bro, this world gonna notice you. Every other bitch would like to fuck with you. So that's the whole point, brother. It's not that you are a millionaire and women wants you. No, it's if you got a good physique, you got the energy, got the aura, women would still want to get fucked by you. Do you understand it? There are so many guys, there are so many people I know
They're like literally multi-millionaire, but you know, their girls are still getting fucked by some guy who doesn't have even $100. So it's not the money, brother. Take care.